morning, student. Welcome to the Gyanvidhi online classes. I am your English teacher. Today we discuss chapter 16. Okay. Chapter 16 grammar, English grammar. Okay. So just I write here grammar, English grammar, and grammar is very important for our life. Okay. On, in, under, and over. Chapter 16. So first you open your book and copy and see the blackboard properly. On means ऊपर, in means अंदर, under यानी नीचे, over यानी कि ऊपर. ठीक है? So just you have to see the blackboard properly and understand all the sentence properly. Okay? I hope you are already open your book and copy. So just we ask some questions for you. Answer this question. I hope you answer this question well. Where are you sitting? यानी कि तुम कहाँ बैठे हो? Where are your books? तुम्हारे बुक्स कहाँ हैं? Where is your school bag? तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? Where is the blackboard? ब्लैकबोर्ड कहाँ है? ठीक है? So just we give the question, then we give the answer. Okay? जहाँ पे आप लोग बैठे रहते हैं वहाँ पे आप लोग बोलोगे. जहाँ बुक रहता है वहाँ बुक्स है बोलोगे. Okay? So look at this picture first. Okay, look at this picture. This vase is on the table. The ball is under the table. Okay, ये जो vase है ये जो फूलदानी बोलते हैं इसको, ये टेबल के ऊपर है. The ball is under the table. और जो ball है टेबल के नीचे है. Okay, so we have to using under. And vase जो है टेबल के ऊपर है इसलिए यहाँ पे using किया हुआ है on. The vase is on the table. टेबल के ऊपर है. ठीक है. The ball is under the table. The ball जो है टेबल के नीचे है इसलिए यहाँ पे under the table. Just you mark on और under, in, over. ये जो red mark है आप लोगों को उसको मार्क करना है. ठीक है. The flower are in the vase. Okay. Flower are not on the vase, not under the vase, not over the vase. In the vase यानी कि ये आपका जो फूलदानी है उसके अंदर में फ्लावर्स है. नॉट ओनली वन फ्लावर्स, टू फ्लावर्स इज हियर. द फ्लावर्स आर इन द वेज. ओके, यानी यहाँ पे जो फ्लावर जो है फूलदानी के अंदर में है. ठीक है. सो वी यूजिंग हियर इन. द डॉग इज जंप्ड ओवर द गेट. द डॉग इज जंप्ड ओवर द गेट यानी कि ये जो डॉग है ये जंप कर रहा है गेट के ऊपर से. गेट के ऊपर से. ठीक है. गेट के ऊपर से ये जंप कर रहा है. द डॉग इज जंप ओवर द गेट. सो जस्ट यू एग्जांपल फॉर योर नॉलेज. ओके. सो you have to understand it very well. Then you write in your notebook or not copy what which place we will using on, in, under, and over. Okay. So we use words on, in, under, and over. Okay. To know where something or someone, something and someone is. हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे on, in, under and over? We use words on, in, under and over to know where something कुछ रहेगा और someone या कुछ person या कुछ animals ऐसा रहेगा. Someone is. So note it in your copy. Okay. So just you look at the picture. Here the picture. Okay.
look at the picture and fill in the blanks on, in, under and over. Okay, just for example, the girl is on the chair. Okay, the girl, you have to see picture, the girl is on the chair. Here I have to write some example. Okay, see the book page number 89 properly. The girl is the girl is on the chair. Here the girl on the chair. Okay, the girl is on the chair, not under the chair, not in the chair. यानी कि गर्ल जो है चेयर के ऊपर बैठी है. Okay, so girls is on the chair. Okay, we have to use it on. Here we have to put on. Okay, we have just have to clear. Then next the boy, the baby. Here the baby is in the cradle. In the cradle. जो बेबी क्रेडल्स मिलता है आजकल बहुत फैंसी या दुकानों में मिल जाता है. द बेबी इज इन द क्रेडल. देखो बेबी छोटा सा बेबी है, ये क्रेडल के अंदर है. सो वी हैव टू यूजिंग इन. हियर वी हैव टू यूजिंग इन. द बेबी इज इन द क्रेडल, यानी कि क्रेडल के अंदर में, अंदर यानी भीतर में. ठीक है, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे इन का उपयोग किए हैं या इन यूजिंग. ओके, देन थर्ड नंबर द बस. द बर्ड flew. The bird flew over the branch. Okay, so here the bird flew over the branch. Branch यानी कि हमारा पेड़ का एक हिस्सा ब्रांच जो रहता है. ठीक है, सो उसी में हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं ओवर, यानी कि ब्रांच के ऊपर से चिड़िया जो है उड़ रही है. ओके, द बर्ड्स फ्ले ओवर द ब्रांच. ओके, ब्रांच के ऊपर से जो चिड़िया उड़ रही है. सो वी हैव टू यूजिंग ओवर. द बर्ड्स फ्ले ओवर द ब्रांच. ओके, देन द कॉक इज on the saucer. Here the cock is on the saucer, यानी cock और plate जो रहते हैं, plate के ऊपर में ही. The cock is on the saucer. The cock is on the saucer. ठीक है, plate के ऊपर में इसलिए we have to using on. Okay, just you have to clear. The cock is on the saucer. Then the monkey is under the table. ये जो बंदर है ये टेबल के नीचे है. The monkey is under the table. The monkey is under the table. टेबल के नीचे इसलिए जो we have to using the monkey is under. You have to using under. Under means नीचे. The table. Okay. So again I have repeated this one. Look at the picture and fill in the blanks using on, in, under or over. Okay. The girl is on the chair. The baby is in the cradle. What we using, because the girl is sitting on the chair, यानी कि chair के ऊपर बैठी है. The baby is in the cradle. In the cradle because the baby is in the cradle, क्योंकि ये baby जो है cradle के अंदर है.
the birds flew over the branch. The birds flew over the branch. The branch, ये जो ट्री का ब्रांच जो है, ये बर्ड्स जो है उसके ऊपर से उड़ रही है, ठीक है, उसके ऊपर से उड़ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओवर यूज किए। देन द कॉप इज ऑन द सर्फेस। कॉप जो है, कॉप और प्लेट दोनों रहता है, प्लेट के ऊपर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ऑन यूज किए हैं। द मंकी अंडर द टेबल। मंकी जो है टेबल के नीचे है, इसलिए यहाँ पे हम लोग अंडर यूज किए। ओके, जस्ट यू नो अबाउट। देन अनदर पेज, द बुक्स आर ऑन द टेबल। देखो यहाँ पे बुक्स दिख रहे हैं आप लोग को, द बुक्स आर ऑन द टेबल। बुक्स बहुत सारे बुक हैं, ठीक है, यहाँ इसलिए बुक्स, नॉट ओनली वन बुक्स, मेनी बुक्स इज हियर, सो वी हैव टू यूजिंग एज बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर है, ठीक है, टेबल के ऊपर है, इसलिए हम लोग ऑन किए हैं। द बुक्स आर इन द बेड। बहुत सारे बुक हैं लेकिन बेड के अंदर है, सो यू हैव टू यूजिंग इन। ओके, द बुक्स आर इन द बेड। Then you have to see the picture. The man is sleeping under the tree, not over the tree, not on the tree, not in the tree. यानी कि ये जो आदमी देख रहे हैं ये पेड़ के नीचे सोया हुआ है, not on the tree, not over the tree, not in the tree. The man is sleeping under the tree. Okay, under the tree, tree के नीचे. Okay, see the picture. Then the girls held umbrella over her head. यानी कि गर्ल्स जो है एक छत्ता पकड़ी हुई है उसके सर के ऊपर। ओके, बारिश हो रही है और उसके सर के ऊपर एक अम्ब्रेला है। द गर्ल्स हैड द अम्ब्रेला ओवर हर हेड, यानी कि सर के ऊपर जो है अम्ब्रेला पकड़ी हुई है, ठीक है। So just you have to clear which place you using on, in, under, over. I hope you all are understand better and do all the question answer very easily. It's not only difficult, not very difficult. It's very easy. Okay. So we using any sentence, any words. First you understand this sentence, then you have to using easily all the words on, in, under, over. Which place you have to doing? Just keep in your mind all the sentence. First you understand all the sentence and using the correct word, correct place. Okay. So another sum we have to do. Just you see blackboard and write in your copy. Okay. Okay, dear student, just you see the blackboard. We do some question answer. So if first open your copy and write down, okay, and understand well. First you see the blackboard properly. What I am doing, then you have to do in your copy. Okay. So just let's start. Choose the correct word. Choose the correct word. Choose the correct word. Here is some 4 options. Okay, A, B, C, D. Okay, so we have to choose one correct word. First number, the bottle. The bottle is kept dash the table. Okay. So first we use a correct word, correct place, on, be, in, see, over, or the under. Okay. So first see the blackboard properly. The bottle is kept dash the table. Here fourth option, on, in, over, under. Okay, so just you keep in your mind, understand the sentence. Okay, then we do correct word
in correct place. Okay. So bottle is kept there. Bottle. So we have to use on. Okay. So you have to tick A number A on, and here you have to write on. The bottle is kept on the table. On the table. यानी कि बोतल जो है टेबल के ऊपर में है. ओके. ऑन मीन्स ऊपर, यानी कि बोतल जो है आपका वो क्लियरली यू हैव टू नो अबाउट बोतल जो है टेबल के ऊपर है. ओके. सो हियर वी हैव टू यूज ऑन एंड टिक हियर A number on. Okay. Then let's do number 2. We are playing. Okay. We are playing. That's the part. Number second, we have to do. The option is on, be, in, or see over, or be under. Here also both option. We are playing dash the park. हम लोग पार्क में खेलते हैं. So what we using? Just you think and give the answer. We are playing dash the park. We using on, in, over और under. ये चारों में से कौन सा लिखेंगे? ओके. जस्ट यू सी we are playing in the park. So here number B we have to tick and write here in. Okay. We are playing in the park. यानी कि पार्क के अंदर हम लोग खेलते हैं. बाहर निकलते ना पार्क के ऊपर खेलते हैं. Just we are playing in the park. Park के अंदर खेलते हैं. So we have to using here in. Okay. Then next you see number 3. Okay. We put butter. We put butter. Dash the toast. We have to टेस्ट टोस्ट. आप लोग सब टेस्ट किए होंगे टोस्ट को. टोस्ट जो है अच्छा लगता है जब बटर लगाएंगे. ऑन, बी नंबर इन, सी नंबर ओवर और डी नंबर अंडर. ओके. सो वी पुट बटर. There is the toast. So what we use on, in, over or under. कौन सा यूज करेंगे? We put in नहीं हो सकता, over नहीं हो सकता, under भी नहीं हो सकता. So we use easily here and tick on the toast. टोस्ट के ऊपर जो है हम लोग बटर लगाने से बहुत ही टेस्टी लगता है. ठीक है नहीं? So we put butter on the toast. Okay, dear student, I am already doing 1 and 2, 3 number, and you understand well all the numbers you have to do. इसी तरह से आप लोग को आप दूसरे नंबर करना है 4, 5 to 10 नंबर. ओके. 4 जो बचा हुआ है 4, 5, 6, 7, 8 नंबर and 10 नंबर. So just do yourself. If you do not understand or do not doing or anyone's numbers you have to doubt, then next time you have to discuss. Okay, the question answers exercises. Okay. So here we already doing 1 and 2 and 3 numbers. All the numbers very easy, not very difficult. Just you have to understand sentence well, then you have to do correct word in correct place. So just you have to finish 1 to 3 number. Okay. Then we have to do another number. Just you have to see the blackboard. Okay. The first. Okay. First here we have to match the column. Okay. Match the
column. Page number 91. Match the column A and column B. Okay. This side column A and that side column B. First number the planet flag over the houses. The plane flew over the houses. यानी कि कुछ जो प्लेन जाता है घर के ऊपर से ही जाता है. So here we have to using over the houses. This side the difference between the sentence and words here. So first number you have to match the plane flew over the houses. Then second number the old man is resting under a tree. एक बूढ़ा सा आदमी जो है वो पेड़ के नीचे रेस्ट लिया यानी कुछ देर वहां पे रुका. ठीक है. The old man is under a tree. The old man is resting under a tree. The sentence is already completed. Okay. The fruits are in the basket. जो फल जो है बास्केट के अंदर है. Not over the basket, not on the basket, not on the basket. Okay. So the fruits are in the basket. यानी कि बास्केट के अंदर है. ठीक है. The birds are sitting on the tree. बहुत सारे बर्ड्स जो है चिड़िया जो है ट्री के ऊपर में बैठे हैं. On the tree यानी कि पेड़ के ऊपर. ठीक है. I kept my lunch box in the bag. मेरा जो लंच बॉक्स है मैं बैग में रखा हूँ. बैग के अंदर है. ठीक. लंच बॉक्स में हम लोग जो जब स्कूल खुलेगा आप लोग भी लंच बॉक्स लेके आएंगे. ठीक है. उस समय जो है बैग के अंदर डाल के लाते हैं कि इसे खुला रखो. बहुत सारे बच्चे जो हैं लंच बॉक्स को बैग के अंदर डाल के लाते हैं. ठीक है. I kept my lunch box in the bag. Okay. So sentence is completed. Just you keep in mind here we have to just doing sentence completed. यानी कि हम लोग सेंटेंस को जोड़ दे रहे हैं. ठीक. एंड कलम ए एंड बी का यहाँ पे मैचिंग हो जा रहा है. सो द प्लेन प्ले ओवर द हाउसेस. द ओल्ड मैन इज रेस्टिंग अंडर ए ट्री. द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. Birds are sitting on the tree. Okay. Then five number I kept my lunch box in the bag. So here some number are completed and some number are not completed. So you see the page number 91. Page number 91. Just you see and do all the number properly. Just take for example for yourself for a example. Okay. So this type you have to doing. And you have to understand first the sentence and आप लोग उसको प्लस कर देना, जोड़ देना. ठीक. कलम में और कलम भी जो है सेंटेंस एक बन जाएगा. ठीक है. So just you do yourself all the number. If you don't understand or don't doing any number, so you have to leave that one. Then we have to discuss next time, next classes, exercise classes. So this one you have to write in your copy. Okay. Then you have to do and rest number see the blackboard. Okay dear student, look at the picture and answer this question. Here is some picture. You have to see properly. Okay. Where are the fruits? Fruits कहाँ पे हैं? Where are the vegetable? Vegetable कहाँ पे हैं? Where are the books? Books कहाँ पे हैं? Where is the dog? Where is the dog sleeping? Dog कहाँ पे सोया हुआ है? Where is the umbrella? Umbrella कहाँ पे है? So just you look at the blackboard. Okay, we will do some question answer. Where are the fruits? So it's easy, not too difficult. Just you do yourself. Okay. Where are the fruits? Fruits कहाँ पे है? The fruits are on the table. Okay. So answer is the fruits are on the table. Okay. So we just write the answer. Where are the fruits? Fruits कहाँ पे? The fruits are on the table. Fruits जो है टेबल के ऊपर है.
Okay, see the picture and do all the number. Okay, so उसी तरह से second number, where are the vegetable? Where are the vegetable? Where are the vegetables? Where are the vegetables? Vegetable कहाँ पे है? Just you see the picture. Where are the vegetables? The vegetables are in the basket. Answer: the vegetable. The vegetables are in the basket. Okay. So just for example, 1 and 2 number I already do question answer. Rest others number you have to do yourself. Okay, it's not difficult, it's very easy. Okay, just to understand the question and do answer. Okay, easily. The fruits, first number, where are the fruits? Fruits कहाँ पे हैं? The fruits are on the table. Table क्यों पढ़े? Then second number, where are the vegetables? Vegetable कहाँ पे हैं? The vegetables are in the table, in the basket, in the basket. यानी कि vegetable जो है basket के अंदर है. Okay? हम लोग को कहाँ पे on लगाना है, कहाँ पे in लगाना है, कहाँ पे over लगाना है, कहाँ पे under लगाना है. Just you keep your mind and think and understand the sentence. Then you have to do easily. Okay? So rest others number you have to do yourself. Then we do the correct sentence. So see the blackboard. Okay? So properly you have to do all the number. Okay, dear student, see the blackboard. Correct this sentence. तो sentence यहाँ पे मैं लिखूँगा. And see the book page number 92. Correct this sentence. I keep my marble. I keep my marble. Marbles. यहाँ पे over है, तो we will be using over a day. Okay? So यहाँ पे over जो है उसको हटा के हम लोग in करेंगे. In a day. I keep my marble in a day, not over a day. Over तो आप इसको cut करें. Okay? Just you to cut it and using this phrase in. Okay? I keep my marble in a day. Okay? Just you have to using in. Then sentence is correct. Okay? So first number you already write in your copy and just you understand. Then number 2. We do number 2. Nancy. One of the nice name. Nancy is under the bedroom. Under the bedroom. Bedroom के नीचे नहीं हो सकता. Just a sentence is incorrect. So here we have to cut under and using in. Okay? Nancy is in the bedroom. Bedroom के अंदर में, not under, यानी कि नीचे में. Bedroom के अंदर में. So Nancy is in the bedroom. This sentence is correct. But first sentence, Nancy is under the bedroom, is incorrect. So we have to use in here in. Nancy is in the bedroom. Okay. Then third number, you have to do third number. The castle. The castle is in the hills. Okay, the castle is in the hills. ये incorrect sentence. In the कैसे होगा? Castle जो है hills के अंदर नहीं है. Okay, on the hills. Hills के ऊपर. The castle is on the hills. So you have to incorrect and just incorrect word and you have to here the is or you have to just a cross mark here, okay, and using on. The castle is on the hills. तो ये जो है आपका सेंटेंस जो है करेक्ट.
but the castle is in the hills. In the hills नहीं हो सकता. Castle is on the hills. Castle जो है hills के ऊपर में रहेगा. Okay. So just I write one last number, the fourth number, the dustbin. Dustbin is on the sink. On the sink. Here we have to dustbin on the sink. On the sinks को क्या है? No. On the sinks. Dustbin is under the sink. Here just you write under the sink. Dustbin is under the sink. Dustbin जो है सिंक के नीचे है, ऊपर नहीं रहता. ओके, अंडर द सिंक. सो 1 2 3 4 number. Just you keep your mind and understand where which place you have to just using. Okay, a correct word. Keep in I keep my marbles in a bag. We using here in. Okay, Nancy is in the bedroom, not under the bedroom, in the bedroom. Bedroom के अंदर है. The castle is in the means है on the beach होगा. Okay, in the place in होगा. Fourth number से कहता है the dustbin is under the sink. Under the sink, not on the sink. Okay. So 1 to 4 number I just do in blackboards. Okay. But rest others number 4 to 5 to 12 number. Okay, 5 to 12 number just here, just see the book. 5 to 12 number just do yourself. Okay, it's very easy, not difficult. Just you have to using the correct word in correct place. Okay, इसी तरह से आप लोग को correct word लगाना है correct place में. And sentence को थोड़ा जो है आप लोग ठीक से समझेंगे. Then you have to easy to do all the numbers. Okay, so dear student, today we have to complete number 16 English grammar, 16 number chapter. Okay, chapter name is on, in, under and over. Okay, ये chapter हमारा complete हो गया. And I hope you all are understand well, better and do all the numbers very positively. Okay, in your home. प्रैक्टिस में और होम एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, जितने बार हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपने घर पे. ओके, एंड इफ यू डोंट नो देन डोंट वरी, आई एम हियर एंड आई डू नेक्स्ट टाइम एंड एक्सरसाइजेस क्लासेस आई एम टेकिंग. I will be taking the classes. That time I will all the numbers write in on the blackboard. Okay, and we are also sending a PDF file for your knowledge. Okay, on WhatsApp group. Then you have to do and download it all the question answer. Okay, not only English subject but also all the subject we have to send in WhatsApp group. So you have to check डेट मतलब चेक करते रहेंगे. ठीक है. Then you have to easy do all the numbers and all the question answer. Okay, so dear student, today we completed 16 chapter in grammar book. So you all are well understanding the chapters. Okay, it's very easy, not difficult. So at the last information for yourself, and the coronavirus is spread all over India. It's very difficult for us. So stay home, stay safe, stay your family, using mask, sanitizers, and using sanitizers also, and washes many times your hand. Okay. So thank you very much for seeing our video. Thank you.